10th. Let's get started. Identify the correct statement with regard to the Act of Union 1707 from the following options. Now, here are the options. The British monarchy surrendered the power to English Parliament. ठीक है, ये ऑप्शन ए है. ऑप्शन बी इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम आयरलैंड. राइट. ऑप्शन सी इज द फॉर्मेशन of the United Kingdom of Great Britain. Option D is the British nation was formed as a result of war with the Scotland and Wales. So any guess? Correct option is the answer is C. Yes, answer is C. Explanation: the Act of Union 1707 between England and Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain. Right? This is clear to you? After which England was able to impose the influence on Scotland. Right? Now, question number second. Which of the following treaty recognized Greece as an independent nation? So here are the options. Option A, Treaty of Versailles. Option B, Treaty of Constantinople. Yes. Option C, Treaty of Lausanne. And option D, none. So correct answer is option B. Explanation: the borders of the Ottoman Empire were restated, which confirmed the terms of the Constantinople arrangement and mark the end of the Greek War of Independence. Right? Independence and creating what? Creating modern Greece as an independent state. ठीक है. ऑटोमन एम्पायर टर्की के अंडर में था, ये तो आपको सबको पता है. ग्रीस, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी वो साइन हुई थी ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज ऑफ, किसकी इमेज दिख रही है आपको? जर्मेनिया. राइट. सो ऑप्शन ए, heroism and justice. ऑप्शन बी, folk and cultural tradition. Option C, revenge and vengeance. And option D, none. So correct option is option A. And explanation: in the given image, Germania wears a crown of, आपको सबको पता है जर्मनी ने क्या वेयर कर रखा था? क्राउन ऑफ ओक लीव्स. एंड इन जर्मन, जर्मनी की अगर हम बात करें, ओक स्टैंड्स फॉर व्हाट? ओक स्टैंड्स फॉर heroism, means bravery. Right? Now, question number 4. Which of the following revolution is called as a forced expression of nationalism? Again, this is a very very important question और ये सब मैंने ओसवाल से लिया है. So option A, French Revolution. Option B, Russian Revolution. Option C, Glorious Revolution. And option D, Revolution of Liberals. Yeah, any guess? So correct option A. Explanation: on till 1789, France was a territorial state, as you all know, under the rule of an absolute monarch, and through फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये तो आपको सबको पता है, लुइस 16 के अंडर में था फ्रांस. एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन gave the idea of the nationalism, brighten up that motivated people to own the country. ठीक है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लोगों को ये आइडिया आया था कि we are the owners of the country. Right? Now question number 5. Which among the following best signifies the idea of liberal nationalism of 19th century Europe? ठीक है. So option A is emphasis on social justice. Option B, state planned socio-economic system. Option C, freedom for individual and equality before law, as you all know. And option D, supremacy of state oriented nationalism.
So correct option is option C. Liberalism stands for what? Liberalism stands for equality and freedom, and that protect individuals' democratic rights. ठीक है? As you all know, equality before law. ठीक है? So next question is, who said when France sneezes, the rest of the Europe catches cold? Very, very, very important question. Option A, Garibaldi. Option B, Mazzini. Option C, Bismarck. And option D, Metternich. Yes, correct option is option B. Explanation, Metternich said so. Metternich ने ऐसा कहा था. जैसे हम छींकते हैं और हम आसपास वालों को भी कोल्ड लग जाता है, वैसे ही यहाँ पे लिखा है when France sneezes, the rest of the Europe catches cold. It means the French Revolution overthrew the monarch that impacts other European countries as well, right? ठीक है, फ्रांस में क्रांति हुई है तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी क्या होंगी, इंस्पायर होंगी, मोटिवेट होंगी कि हमें भी क्या करना है, रिवॉल्यूशन करना है. ठीक है, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द मोनार्की. Now question number 7, who among the following formed the secret society called Young Italy? Option A is Otto von Bismarck. Again, this is a very important question. Option B is Giuseppe Mazzini. Option C is Duke Metternich. And option D is none. So, correct option is option B. Explanation of this part is Giuseppe formed this society to transform Italy into United Republican State. Right? Next question, 8th question. Which one of the following states was ruled by an Italian princely house before unification of Italy? जल्दी बताइए. Any guess? Option A, Lombardy. Option B, Kingdom of Two Sicilies. Option C, Sardinia, Piedmont. And option D is none. So, correct option C. Explanation, Italian language was not commonly used and had territory and differences, but only in certain people not considered themselves Italian, right? So, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया. Next question is, which of the following countries are considered as the cradle of civilization? Is option B, right? Explanation, as you all know, as Greece was the land of educated elite who spread their culture from all over the Europe, right? Next question, arrange the following in the correct sequence. ठीक है, आपको करेक्ट सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है. ऑप्शन 1 इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. फर्स्ट ऑप्शन 2 इज फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस. ऑप्शन 3 इज लॉर्ड बायरन डाइड विद फीवर, ये आप सबको पता है. एंड ऑप्शन 4 इज ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. तो आपको इन सबको क्या करना है, अरेंज करना है. ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिंस. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस इज, देखिए फर्स्ट क्या हुआ था, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया जो कि कब स्टार्ट हुआ था, विच बिगिंस इन 1821. सेकंड क्या आएगा, लॉर्ड बायरन डाइड इन 1824 एज यू ऑल नो फ्रॉम फीवर. एंड थर्ड इज फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. एंड फोर्थ इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शंस कैसे आएंगे आपका? फर्स्ट ऑप्शन 4, 3, 2 and 1. So answer is 4, 3, 2, 1. Correct sequence is 4, 3, 2, 1. Right? Next question. Analyze the information given below. Considering one of the following correct options. Right? While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue. ठीक है, ये तो आपको सबको पता है, जैसे हमने जर्मानिया देखा. ठीक है, how does one go about giving a face to a nation artist in the 18th century and 19th centuries? Found a way out by personifying. तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने? Personifying a nation, right? In other words, they represented a country as if it were a person. ठीक है, so options are A, portrait of a nation. B, idol of a nation. Option C, personification
of a nation, and option D is visualizing a nation. So any guess? Correct option is answer D, right? Now next question is analyze the information given below considering one of the following correct options. ठीक है? He was perhaps the most celebrated of Italian fighters. He came from a family and guest in postal trade and was the sailor in the merchant navy in 1833. Then he met Mazzini, joined the Young Italy movement and participated in a Republican uprising in Piedmont in 1834. So here are the options. ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपको बहुत अच्छे से लर्न करने, राइट? ऑटो वन बिस्मार्क, ए ऑप्शन, बी इज गिउसेपे मैज़िनी, ऑप्शन सी इज काउंट खेवर, अकाउंट कैमिलो जी खेवर. ये पूरा आपको लर्न करना है नाम, है ना? इसका फुल फॉर्म मतलब फुल नेम भी पूछा जा सकता है, राइट? ऑप्शन डी इज गैरिबाल्डी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट नहीं पूछा. इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन इज ड्यूरिंग द ईयर्स following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. ठीक है, ये ऑप्शन ए हो गया. ऑप्शन बी इज secret societies sprang up in many Indian states to train revolutionaries. अब यहाँ पे इंडिया कहाँ से आ गया? ठीक है, तो आपको पता चल गया ये इनकरेक्ट ऑप्शन एंड स्प्रेड देयर आइडियाज. तो ऑप्शन सी इज to be a revolutionary of the at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom, right? Option D is most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom, right? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. मैंने पहले ही आपको बताया इंडिया का तो कोई रोल ही नहीं था, इंडिया आ गया यहाँ पे, तो यूरोप के उसमें इंडिया कहाँ से आ गया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन. अगेन फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन from the following. Option A, the first upheaval took place in France in July 1930. Option B is the Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1850 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. Option C, when America sneezes. नहीं, ये गलत हो गया. When France sneezes था, ठीक है? Metternich once remarked. हाँ, Metternich का स्टेटमेंट है, लेकिन अमेरिका नहीं था, फ्रांस था. Once remarked the rest of Europe that is cold. ठीक है? And option D is the July Revolution. So correct, the July Revolution, it sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands. ठीक है? So correct option is option C. ठीक है? That's all from my side. If you like my content, then do subscribe my channel, hit the bell icon to receive more updates, and share this video with your friends and colleagues to receive ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए. और ये जो मैंने पूरा आपको सॉल्व करवाया, ये उस वाल से करवाया और आगे भी मैं आपको करवाऊंगी. अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी कराऊं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप ऐसे वीडियोस और चाहते हैं. देन आई मेक मोर वीडियोस ऑफ दिस टाइप. ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग.